जय जगन्नाथ। वेलकम टू यूजीपीजी सिंपल मैथ। सो आज का हम लोग का लेक्चर रहेगा। सो टुडे विल डिस्कस ऑन बाइनरी ऑपरेशन एंड ग्रुपॉइड्स। सो टू अंडरस्टैंड बाइनरी ऑपरेशन ग्रुपॉइड्स, सो बिफोर गोइंग टू बाइनरी ऑपरेशन, सो हम लोग कुछ नोटेशन देख लेते हैं जो हम लोग आगे हर कोई लेक्चर पे इसी नोटेशन को यूज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, n is set of all natural numbers. This consists of set of all natural number 1, 2, 3, 4, 5. This is n. And z is set of all integers. So जहाँ पे 0, 1, 2, -1, -2 ये सब ये सेट पे रहेंगे. Like rational numbers are of the form p by q, where q is not equal to 0 and p and q both are integers. Like 1 by 2, 1 by 3, 2 by 7. All these are rational numbers. वो रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर. सो दिस इज डिनोटेड बाय q bar. So this consists of set of all irrational number like √2, √3, √5. All these are irrational number. And set of all complex number will be denoted by c. So these are of the form a plus ib, where a and b are both real numbers with this I square equal to -1. Like 2 plus 3i, 4 plus 6i, all these are complex numbers. And set of all non-zero integers, rational number, set of all non-zero rational numbers, set of all non-zero real numbers are denoted by z star, q star, r star, c star. Like q star means what? q से हम लोग जीरो को डिस्कार्ड कर रहे हैं, so this set is called q star. Like r star मतलब r से set of r से हम लोग जीरो को हटा रहे हैं, so that is our r star. So next let's start with the definition of binary operation. So binary operation basically any function from the Cartesian product of set to itself is called a binary operation. So binary operation, so here the star is a function from g cross g to g, so this is a binary operation. And any set equipped with a binary operation is called a groupoid or magma. Like g कोई भी एक set है, यहाँ पे एक binary operation है, then g with this star is called a magma. So for instance, set of all natural number पे addition एक binary operation है. क्यों एक binary operation है? Because this addition given any two integers, कोई भी आपके पास दो integers like natural numbers है, तो ये दो natural numbers हैं, हम लोग की एक unique natural numbers मिलेगा a plus b, that is a natural numbers. So हम लोग क्या कह सकते हैं? This addition is a function from n cross n to n. बिकॉज कोई दो नेचुरल नंबर के लिए हमें एक यूनिक नेचुरल नंबर मिल रहा है, सो दिस यूनिकनेस विल डिफाइंस द फंक्शन. इट सिमिलरली जेड पे ये एडिशन एक फंक्शन है, क्यू पे एडिशन एक फंक्शन है फ्रॉम क्यू क्रॉस क्यू टू क्यू, सो दैट मीन्स दिस जेड इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन जेड क्यू आर सी. सो सिमिलरली सब्सट्रैक्शन इज ऑल्सो ए बाइनरी ऑपरेशन on z q r c given any two integers, say a और b दो integers है, so a minus b is a unique integers, right? So जैसे कि हम लोग कर सकते हैं 2 और 3 है, for example 2 और 3 है, तो हम लोग को 2 और 3 से क्या मिल सकते हैं? 2 minus 3 that is -1, वो एक unique integers है. But this subtraction is not a binary operation over n. ये क्यों नहीं है? Because suppose 2 और 3 दो natural numbers हैं, बट 2 और 3 का इमेज जो होगा सब्सट्रैक्शन वो -1 मिल रहा है, दैट इज नॉट इन n. सो ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. लाइक फॉर जैसे भी बहुत सारा हम लोग ले सकते हैं 1 और 1, सो दिस इज एन एलिमेंट ऑफ n क्रॉस n, बट इनका जो इमेज होगा क्या होगा? 1 -1 जो 0 है, दैट इज नॉट इन n. सो दैट्स व्हाई दिस सब्सट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन. Similarly, multiplication is also a binary operation on n, z, q, r, c. जैसे कोई भी हम लोग के पास दो नेचुरल नंबर है या दो रियल नंबर है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक यूनिक रियल नंबर मिलेगा. That's why this multiplication is also a binary operation over r, q, n, z, c. But ये मल्टीप्लिकेशन एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर पे. क्यों नहीं है? आपके पास कोई भी दो इरेशनल नंबर है, जैसे कि से फॉर में √2 एक इरेशनल नंबर है,
रूट टू दो इरेशनल नंबर है, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है रूट टू इंटू रूट टू इज टू, दैट इज नॉट एन इरेशनल नंबर. मल्टीप्लीकेशन इज नॉट ए फंक्शन फ्रॉम दिस क्यू बार क्रॉस क्यू बार टू क्यू, राइट. सो let's see some program related to this binary operation. So let's start with this one. So यहाँ पे देख सकते हैं, so which of the following is true. So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट है n is a subtraction is a binary operation on n. अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे subtraction is not a binary operation on n because 1 है, then इसका इमेज 1 minus 1 that is not in n, so that's why this is not a binary operation. Like addition is a binary operation on r minus 2, that means set of irrational number पे addition एक binary operation है क्या. Like इसके लिए हम लोग ले सकते हैं रूट टू कमा रूट टू, these are two irrational number, but इसका इमेज क्या मिल रहा है हमें, that is रूट टू प्लस रूट टू, और we can take for example रूट टू माइनस रूट टू. Then root 2 minus root 2 is what? So that is that will give us 0, right? So यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे root 2 minus root 2 plus minus root 2 जिसका इमेज हमें मिल रहा है 0, but 0 is not an irrational number, so that is not in Q bar. That's why this addition is not a binary operation on set of irrational number. Similarly, this multiplication is also not a binary operation over irrational number. हम लोग रूट टू ले सकते हैं, उनका इमेज देखेंगे तो रूट टू इंटू रूट टू that is 2, right? So that is not an irrational number, so that's why this is not a binary operation. That means Z is a binary operation on Q. So again let's see another problem on binary operation. Let's start with this first part. So which of the following is true? So we can see here this division is a binary operation on Z. So कोई भी, let's पहले इसको एनालाइज करते हैं, हम लोग क्या यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं. Like 2 comma, like let me take 1 comma 2 division. So this division is a binary operation on Z और नॉट. सो कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, उनका इमेज देखते हैं, तो इनका इमेज हमें क्या मिल रहा है. सो इमेज इज 1/2. सो 1 और 2 को 1 डिवाइडेड बाय 2, इज दिस एन इंटीजर? सो दिस इज नॉट एन इंटीजर, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन. सो सिमिलरली डिवीजन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q. नाउ ये इंटरेस्टिंग है, कोई भी अभी मैं दो रेशनल नंबर ले रहा हूँ जैसे 2,3, उनको डिवीजन करूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, एक रेशनल नंबर ही मिल रहा है. जैसे p/q से फॉर अ मोमेंट p1/q1 p2/q2 लेते हैं, तो इनका हम लोग जब देखेंगे तो वी आर अगेन एंड अप विथ ए रेशनल नंबर. बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, हम लोग किसका इमेज देखते हैं, 0,2 लेते हैं, तो इसका इमेज देखेंगे तो ये क्या आ रहा है, लाइक दिस इज 0/2, सो देयर इज नो इशू, राइट. सो दैट इज 0. बट इफ यू टेक 2,0 देन दैट इज 2/0 व्हिच इज नॉट डिफाइंड. सो दैट मीन्स ये एक नंबर है, डोमेन पे बिलोंग कर रहा है, बट उसका हमें इमेज नहीं मिल रहा है. दैट्स व्हाई दिस डिवीजन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन Q. अगेन सेम प्रॉब्लम यहाँ पे भी हो रहा है R पे. 2,0 बिलोंग्स टू R क्रॉस R, ये रियल नंबर का एलिमेंट है डोमेन पे, बट ये एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं है. सेम 2/0 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ R. सो दैट मीन्स व्हाट, दिस फोर्थ वन इज ट्रू. लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. सपोज एक सेट पे number of element in a set is n, that is given to us. Then the question is how many binary operations are there over this G. Means हम लोग कितना इस टाइप का बाइनरी ऑपरेशन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्रॉम G क्रॉस G टू G, मीन्स ओवर G कितना इस टाइप का बाइनरी ऑपरेशन. सो बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या था, बाइनरी ऑपरेशन इज जस्ट ए फंक्शन फ्रॉम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ G टू इटसेल्फ. सो हम लोग इस टाइप का कितना फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ जितना फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उतना हमें बाइनरी ऑपरेशन मिलेगा. नाउ इफ द साइज और
कार्डिनलिटी ऑफ G इज n, तो G क्रॉस G पे कितना एलिमेंट मिल जाएंगे, n इंटू n, यहाँ पे n स्क्वायर एलिमेंट हमें मिल गया और यहाँ पे हमें पता है n एलिमेंट है. So total number of function from a set having n square element to a set having n element is what? That is n to the power n square. So this is the total number of functions. So the answer is second. In the next video, we'll discuss more about on this group.